actual scores will be verified by the auditor. Very, very crucial piece of documentation. पूरा ISO 14001 एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर एंड इससे एसोसिएटेड ट्रेसेबिलिटी पे पूरा ISO 14000 चलता है। नया ISO के सारे स्टैंडर्ड्स रिस्क अपॉर्चुनिटी फोकस्ड हो गए, लीगल कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड उसका सब्सिक्वेंट अपकीप। ये इलाका ऑडिटर का कभी छूट ही नहीं सकता है। इवन इफ ही वांट्स टू गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ही विल स्टिल नॉट गिव यू वो लीगल कंप्लायंस। Hello and welcome. Welcome to this very simple video on helping you understand the mandatory documents from ISO 14001 2015 standpoint. I would advise that you keep a pen and paper handy, make a note of these documents, because in the pursuit of your implementation of 14001, it is imperative कि एक भी डॉक्यूमेंट छूटे नहीं। जो डॉक्यूमेंट छूटेगा आपका स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन रुक जाएगा। सो इंश्योर करिए दैट यू अंडरस्टैंड। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दिस लिस्ट हैंडी, बिकॉज ड्यूरिंग दी सर्टिफिकेशन परसूट एक भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट विल बी द स्कोप ऑफ योर EMS. स्कोप इज अ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट फॉर एनी मैनेजमेंट सिस्टम, 9001 हो, 14001 हो. So what is the product service that you provide? What are the physical locations in which you are pursuing your certificate will be important question. Scope as a documented information is a mandatory document that you will have to consider. Another very basal document that is required for all management systems is your policy statement. Because this is about environment related policy, your environmental policy is a mandatory document, and communication of the policy to the relevant stakeholders, your employees, your interested parties, etc., is a crucial piece of documentation and the associated evidence that the auditor will look at. तो policy होना है, पॉलिसी का टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल होना है, पॉलिसी का कम्युनिकेशन का एविडेंस टू एम्प्लॉयज एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक वेंडर्स एसेट्रा हैज टू बी डन. तो या तो आप एविडेंस रख रहे हैं दैट आपने ईमेल किया है सारे एम्प्लॉयज को, पॉलिसी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और हर एम्प्लॉय का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है जहां पे एम्प्लॉय को एनवायरनमेंट की पॉलिसी दिखाई जा रही है, या ये पॉलिसी डिस्प्लेड है एट सेवरल लोकेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल और एनी ऑफ दीज मैकेनिज्म्स कैन बी पुट टू यूज. Another very important document will be your KPIs. Now we are talking in terms of environment. So ISO 14000 will require you to have objectives and plan to achieve those objectives. So you will need a list of key performance indicators, your plan on achieving them, and then what is your achievement vis-a-vis your plan is an important document, and this entire landscape will be checked. List of KPIs, list of associated plans, and your actual scores will be verified by the auditor. Very, very crucial piece of documentation. ISO 14001 में एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बनता है वो है एस्पेक्ट इम्पैक्ट का रजिस्टर, AI register like it is called. So you will need a mechanism of identification and evaluation of the aspects and impacts of your environment associated with every department. So आपके पास aspect impact for HR, aspect impact for admin, aspect impact for your factory setup, every element पे aspect impact का register चाहिए. This will need a structured process of identifying
environmental aspects and evaluation of their impact on the environment and determination of significant aspects has to be covered as mandated in clause 6.1.2. पूरा ISO 14001 rests on one document, aspect impact register, एंड इससे एसोसिएटेड ट्रेसेबिलिटी पे पूरा ISO 14000 चलता है. तो प्लीज इंश्योर करिएगा कि इस डॉक्यूमेंट को मिस ना करें. नेक्स्ट, रिस्क अपॉर्चुनिटी असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन. नया ISO के सारे स्टैंडर्ड्स रिस्क अपॉर्चुनिटी फोकस्ड हो गए. सो you will need to identify risk and opportunities vis-a-vis your environmental performance. What are you looking at doing in terms of whenever you see negative impacts? What are you doing in terms of improving the positive outcomes? ये पूरा life cycle risk opportunity का is a 6.1.1 का documentation is a mandatory element that ISO auditor will look at. ऑडिटर का फेवरेट प्लेग्राउंड, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस. जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम योर GST डॉक्यूमेंटेशन टू योर पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, अभी मेरे एक ऑडिट में MSME का सर्टिफिकेशन भी मांग लिया. कंपनी की अपनी गाड़ियां हैं तो उसका भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांग लिया. सो वॉट एवर आर योर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, पूरा लीगल रजिस्टर ISO 14000 में इन स्कोप है. इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर अराउंड लीगल कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड उसका सब्सिक्वेंट अपकीप. सोचना भी मत इसको मिस करने का. ये इलाका ऑडिटर का कभी छूट ही नहीं सकता है. इवन इफ ही वांट्स टू गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ही विल स्टिल नॉट गिव यू. वो लीगल कंप्लायंसेस चेक करेगा ही करेगा.